आज आम जो फर्स्ट इयर इंग्लीश रहा तो टेन्स पैटर्न जो क्लासटा अच्छी टेन्स पैटर्न उपर आज आम पढ़ा तो टेन्स पैटर्न टेन्स प्रथम कथा हूँ टेन्स पे टेन्स कहले कौन ओडिस टेन्स टेन्स कहले आम नॉर्मली बुझु काल बोलिकी नहीं कि यस वी आर थिंकिंग दैट टेन्स मीन्स इन ओडिया इट इज कॉल्ड काल but in English if you look at the English grammar books then you can see that tense refers to time exactly what is it tense refers to time tense कहले time. So there might be a question. You can ask a question here. Sir. Why? What is the problem? Why we are telling that tense is time? What is the difference between tense and time? And why? What is the similarity between tense and time? These are the questions normally arises within the mind of students. So what happens here? Tense is derived from the word tempus. Tempus, Greek word. It is tempus, which means time, which stand for time. So tempus is a Greek word which means time. That's why we can call tense is equal to time. So let's divide the time then. Let's divide the time. Time को वर्तमान आटे के भाग करिबा पिले. Let's divide the time. So you can say suppose now I'm taking my class. So it is present. Then this is your before now. Then you can say your after now. This is how your time can be divided. Yes or no? So now, before now, and after now. This is your present. You can say this is your present, and this is your past, and this is your future. It is future. Present, past, and future. So what happens then? Now in this class, we'll look how the time, why this time is divided into three parts. What is the reason? Why? Because आउ किसी नहीं आउ कौन अच्छी कि एबे भविष्यत वर्तमान आउ अतीत ए तीनटा जिनस गला परे इज देयर एनी टाइम लेफ्ट किसी टाइम अच्छी कि देयर इज नो टाइम ओके तो वर्तमान हमें आलोचना करिबा यार पैटर्न विषय रे टेंस रो पैटर्न दा कोन व्हाट इज द पैटर्न एंड व्हिच पैटर्न टेंस इज एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टेड ऑफ को पैटर्न रे टेंस रो कंस्ट्रक्शन टा हेइ छै नहीं तो प्रथम जिनस पिले आमे जो जानिचे टेंस तीन भाग रे भाग होइची टेंस टा तीन भाग रे भाग होइची कोन कोन एक हैला तमरो प्रेजेंट दुई हैला एपटे रहिला तमरो पास्ट आ एपटे रहिला तमरो फ्यूचर एठी प्रश्न उठे सर फ्यूचर टा कोन उठे टेंस फ्यूचर टा को हम सर माने कहते फ्यूचर टा टेंस नु हो अच्छा फ्यूचर टा कहीं की टेंस नु हो जदि प्रश्न उठे फ्यूचर टा कहीं की टेंस व्हाई फ्यूचर इज नॉट कॉल्ड ए टेंस इज देयर एनी ग्रामेटिकल रीजन दैट फ्यूचर इज नॉट कॉल्ड ए टेंस ग्रामेटिकल रीजन किछि अछि कि इफ देयर इज एनी ग्रामेटिकल रीजन यस आई कैन टेल यस देयर इज सम ग्रामेटिकल रीजन दैट्स व्हाई फ्यूचर इज नॉट कॉल्ड अच्छा जण पिला कहता सर मु फ्यूचर को टेंस कहले किछि भूल हबो कि नो यू कैन कॉल इट you can call it if you want to call future as tense you can call it no problem there is no problem I have already told every rule in English has some exception सबु इंग्रजी रे जतिके नियम अछि सबु नियम पछरे एक्सेप्शन काम करे गेटिंग मी भवानी क्लियर दिसुनी जदी बाबा तमे ठीक पिक्सेल बढ़ई की देखो you just raise the pixel of your mobile then you can see it clearly तो प्रत्येक टेंस को चारि भाग रे भाग करा हेची प्रत्येक टेंस को चारि भाग रे भाग करा हेची गोटे होची सिंपल आ गोटे हला कंटीन्यूअस कोन बिले सिंपल देन कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव यू कैन से तापर रहिला परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव एटा होची एमती भाग करा हेची प्रत्येक टेंस को केते भाग रे भाग कराई छी चारि भाग 1 2 3 4 भाग यस और नो सिंपल देन कंटीन्यूअस देन परफेक्ट देन प्रोग्रेसिव चारि भाग तो एठी हम कहि पारैबा समय को चारि भाग रे विभक्त कराई छी द टाइम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कोन कोन गोटे होची अच्छा ए सर एठी गोटे प्रश्न उठे सर काहे की ए चारि भाग ही करा गला 5 भाग 6 भाग भी तो करा जाई पारि थांता काहे की 4 भाग करा गला पिले एठी मु गोटे जिनस क्लियर करबा पई चाहिबी एज पर इंग्लिश ग्रामर
You can see English grammar, University English Grammar by Quick and Greenbaum. You can see the comprehensive English grammar by Jeffrey Leeds, Greenbaum, Quick, and Astra. In this, it is very clearly written that what happens. English is or the pattern of English, or you can say the part of English tense is derived from aspect. Kodru aschi, aspect ru aschi. Aspect. ଆଉ ସବୁ ଟେନ୍ସର ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଏଭ୍ରି ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଟେନ୍ସଟା ତିଆରି ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଲେଟ୍ ମି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସେ ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସୋ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ and second thing is your progressive aspect कौन progressive aspect okay perfect aspect और progressive aspect वर्तमान कथा रहिला सर एटा कोन व्हाट इज दिस परफेक्ट एस्पेक्ट एंड व्हाट इज दिस प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट पहिले परफेक्ट को हमें कहि परिबा कंप्लीटेड एक्शन इज कॉल्ड परफेक्ट एस्पेक्ट जय जगन्नाथ देन प्रोग्रेसिव aspect is called continuous action so टिके डीपली चिंता करो an action can be complete an action can be continuing 3 नंबर किसी मिलिबो डू यू गेट आउ किसी मिलिबो अच्छा गोटे जिंस होई पारे गोटे जिंस मिलिबो सर गोटे जिंस काम माने चालीची अधारे अछि नहीं चालीची अधारे अछि ताको हमें कोन कहिबा परफेक्ट प्रोग्रेसिव अछि सेति पई अछि ना नहीं आ गोटे जिंस जस्ट चालीची सर यस for that also something is there what is it then that is your continuous tense आ गोटे जिन सर सबुदिन से जिनटा सेमती सी कौन अच्छी अच्छी व्यवस्था अच्छी कौन अच्छी प्रेजेंट सिंपल टेन्स अच्छी सिंपलटा आम यूज करुँ ये सर नो तो ये दिस इज हाउ द टेन्स आर मैड कंप्लीटेड एक्शन सर गोटे जिन जस्ट सरीगला तार इफेक्ट स्टिल नाउ अच्छी कौन यूज करवा सो सिंपल सो इजी प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स ये अच्छी सविता गुड मॉर्निंग बेटा तो दिस इज व्हाट वी कॉल Divya Prakash, love you too, beta. Thank you for joining the class. So what happens then? Now, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ଦେଖିବା. What are the patterns? କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ବାବା ପିକ୍ସେଲ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ପିକ୍ସେଲ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସିମ୍ପଲର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଖିବାରେ ପିଲେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ what is the construction of present simple tense କୋଉ ଫର୍ମୁଲାରେ ଏଟା ତିଆରି ହେଉଛି what is the construction of present simple tense construction टा कौन देख प्रथम कथा है प्रेजेंट सिंपल रो कंस्ट्रक्शन पूरा गोटे गोटे टेंस रो कंस्ट्रक्शन मु कहबी प्रथम कथा होची सब्जेक्ट प्लस v1 सब्जेक्ट प्लस v1 दिस इज द कंस्ट्रक्शन Chandan, thank you, beta. No problem. I'm a classroom teacher and I love to teach inside the classroom. That's why I'm taking those classes. Okay, no, don't worry. Jai Jagannath, Santosh, Jai Jagannath. So, subject plus V1, this is the structure. Subject plus V1. अच्छा, sir, एठी प्रश्न उठे sir, subject plus V1 तो हैला. तो या आगे कॉलेज तो वर्तमान क्लोज अच्छी कॉलेज लॉकडाउन ही जी बा. Divya Prakash, Bardhaman college lockdown is it's you can say this is also the class of my college. I'm taking this is for especially first year students. I'm taking this class. My students are there. So what happens? Subject plus V1. Sir, एथिरा आउ किछि ऐड करि परिबा की? Thank you. एथिरा आउ किछि ऐड करि परिबा की? Yes, you can add if you want to add. कोन ऐड करि परिबा ताहेले तो एठी प्रश्न उठे जे गोटे सेंटेंस भितर कौन व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज इनसाइड ए सेंटेंस बुझीगला एठी प्रश्न उठे जेतेबेला सब्जेक्ट प्लस v1 मु खाली सब्जेक्ट प्लस v1 खाली छाड़ी देबी सुदर्शन थैंक यू बेटा तो सब्जेक्ट प्लस v1 करके छाड़ी देबी तापर आगे आ कौन लागी पारिबो ना नहीं ए प्रश्नटा उठे तो एठी पिले आम कौन करि परिबा we can use object we can use complement we can use adjunct मन रखिबा तीनटा जिंस we can use कोन गोटे हला ऑब्जेक्ट गोटे हला adjunct आ गोटे complement अच्छा एटी आउ गोटे प्रश्न उठे पिला माने जोटा फ्रीक्वेंटली इनसाइड द क्लास दे आस्किंग जोटा पिला माने क्लास भितर पचारन दे मु सही प्रश्न कहूची
सर एठी मु का दुईटा ऑब्जेक्ट लगे पारंती यस यू कैन यूज व्हाई नॉट यू कैन यूज टू ऑब्जेक्ट्स अच्छा दुईटा कॉम्प्लीमेंट हे परिबो नाही हे परिबो नाही दुईटा एजेंट हे परिबो नाही हे परिबो केतेबेले हे परिबो इफ यू कैन पुट ए कंजंक्शन जदि गोटे कंजंक्शन लगेबो आ गोटे पार्ट करिवो ताहले हे परिबो बट इफ I am talking about here, especially the simple sentences. We should go for one. Subject plus V1 plus object or object you can use. Subject plus V1 plus complement you can use. Subject plus V1 plus adjective you can use. This is what we call the structure of present simple tense. Clear? This is there is no problem of light, there is no problem of mobile data, and still you are telling clear this nahi. Why I know? I don't know. ओके तो बर्तमान पिले एटा थिला तार स्ट्रक्चर जेमती मु लिखुची गोटे सेंटेंस सपोज 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 प्रथम हैला जेमती आई सब्जेक्ट हे गेला देन वर्ब हे गेला ईट देन एप्पल हे गेला ये हो गेला तमरा कोन ऑब्जेक्ट आई ईट एप्पल ठीक अछि एटा को टेंस हैला पिले एटा हैला प्रेजेंट सिंपल टेंस रो स्ट्रक्चर देखो एटा हला सब्जेक्ट एटा हला तमरो वर्ब रो एक नंबर फॉर्म एटा हला तमरो ऑब्जेक्ट एटा हला स्ट्रक्चर वर्तमान प्रश्न उठे एटा तो प्रेजेंट सिंपल बोली हम केमिति जानिबा हाउ शुड वी नो नहीं वर्तमान प्रश्न उठिला मु सर केमिति जानिबे एटा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे आपण लिखि चंती बोली कि पूरा बेस रो सिखिबा बिले जहाँ शिखा भलसे शिखा कम शिखा भलसे शिखा गुड़ाई जिन गाई देकी जीवार ना मत तो प्रथम कथा है कौन आई इट एप्पल मुझे लिखिली सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सो सिंपल यस और नो तो एठी केमती जानिबा एठी प्रश्न उठे देख पिले मन रखिबा टेंस इज आइडेंटिफाइड बाय द वर्ब व्हाट इज इट इंग्लिश ग्रामर रे लेखा आइछि टेंस इज आइडेंटिफाइड बाय द वर्ब और गोटे जदि आम रूल देखा टेंस इज इंडिकेटेड बाय द वर्ब और वर्ब इंडिकेट्स टेंस मन रखा कौन वर्ब सब बेले आमको जदि टेंस जानिबार अछि इफ वी वांट टू नो द टेंस ऑफ द वर्ब वी मस्ट लुक एट द if we want to know the tense of the verb we must look at the verb ओके तो ये वर्ब टा कौन अच्छी आई इट अच्छी देयर इज नो ऑक्सिलरी यूज बिफोर इट और आफ्टर इट देयर इज नो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म यूज विद द वर्ब गेटिंग मी सो व्हाट हैपेंस देन आई इट वर्ब सो वर्ब टा मु देखिली सब्जेक्ट प्लस V1 अच्छी सो इट इज व्हिच टेंस इट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस इठी प्रश्न उठे सर सब्जेक्ट प्लस V2 जदि थांता एठी आउ गोटे प्रश्न उठे पिला माने मन रखिबा वर्ब रो केतेटा फॉर्म अछि मते किए कहिबो कमेंट करके ए वर्ब हैज हाउ मेनी फॉर्म गोटे क्रिया रो जो क्रिया इंग्रजी रे सब क्रिया अछन ना वर्ब जाकू कहू हमें से वर्ब केतेटा ये अछि तांगर केतेटा फॉर्म अछि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब तीनटा फॉर्म चंदन कहला तीनटा हिरसुंद कहला पांचटा अम्लान कहला तीन सोनी कहला तीन क्षमसागर 4 ओके तो बहुत पिला तीनटा फॉर्म कहउचंती स्पेशली मोर आम क्लासरूम रो पिला पांचटा बोली कहउचंती आम कॉलेज पिला जो माने अछंती से माने पांच बोली कहउचंती बाकी पिला जो माने अछंती से माने 3 4 बोली कहउचंती बिले आई वांट टू प्रूव यू नाउ आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट ए वर्ब हैज 5 फॉर्म एटा होची हमर प्रॉब्लम रे पिले एटा तमरो प्रॉब्लम दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम दिस इज द प्रॉब्लम विथ योर टीचर से माने जहाँ पढ़ी सेया ही पढ़ाउचंती नुआ किछि कल्चर करू नांती okay so a verb has 5 forms no basically 3 forms you can tell according to the tense you can tell 3 forms are there but a verb is has pure 5 forms pure 5 forms what are those one is the base form base jaha ko root coach am root base hochi kono root jothuru सृष्टि heichi that is called root okay base then number 2 is your inflectional form or which form and you can say inflectional form is called your V1 this also called V1 form I'll prove it don't worry number 3 is V2 or this can be called present form
This can be called present form, and this is called your past form. Now number 4 is what? V3 is there, that is called participle form. This is your past participle form. Number 5 is gerund or participle form. Gerund or participle form. Got it? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ବେସ୍ ହେଉଛି ବେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ବର୍ବ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ବେସ୍ ରୁଟ୍। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ପିଲେ, ଏଠି ଲେଖିଲି ଇଟେନ୍। କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଇଟେନ୍। ଇଟେନ୍ଟା କ'ଣ? V3 ଫର୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଇଟେନ୍ଟା। ତ ଇଟେନ୍ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟା କୋଉଠୁ ହେଇଛି? where did I get that ଇଟେନ୍? from it, isn't it? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କୋଉଠୁ ପାଇଲି? ମୁଁ ଇଟେନ୍ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇଲି? ଇଟ୍ରୁ ପାଇଲି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଟ୍। ଓକେ, ନାଓ V1 ଆସିଲା ମାନେ V1 ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯିବ। ବେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନାଲ ଫର୍ମ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ V1 ଫର୍ମ। ବେସ୍ and inflectional form is called the V1 form. Like ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବି? ଇଟ୍ ଲେଖିପାରିବି and eats ଲେଖିପାରିବି। Eat and eats. This is your what? V1 form or present form. Eat and eats. Okay. Next, V2 is your at. This is your at. ଖାଇଲି. At. And V3 is what? V3 is eaten. Now the last two, nobody is telling this. Everybody is telling this is the ing form of verb. No, this is not the ing form of verb. This is not the ing form. You can say it has two meaning. One is your gerund, another is participle. Okay, look at this, gerund and participle. This is in normally पिला मन को बुझेबा पे हम कहि दे परिबा एटा होछि ing form पिला मन को बुझेबा पे। बट ग्रामर भितर को जदि जेबा हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल यूज जदि देखिबा दिस इज कॉल्ड द gerund form or participle form of verb. What is the reason why they are called gerund? What is a gerund and what is a participle? The question arises here. Students must ask question because ask stands for three words: attitude, skill and knowledge. Remember this. Ask stands for attitude, skill and knowledge. That's why you must ask your teacher whatever he is telling, whatever he is teaching inside the classroom. A student must ask them why and how. Why and how. Yes or no? And that is my habit. Why? Because I was asking during my college life. That's why normally I ask the student inside the classes why and how. So gerund. What is a gerund then? Gerund. What is a gerund? Gerund is called the verbal noun. Remember this. What? Gerund stand for verbal noun. ଯେତେବେଳେ verbal noun କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? verb plus noun. verbal noun ନାଇଁ cluster କୁହନ୍ତି ତାକୁ। verb plus noun is called verb noun. So when a verb is acted upon as a noun, remember this. When a verb is acted upon as a noun is called verbal noun. Yes, Abhishek. Yes, infinitive is also form of a verb. All the base form are the infinitive form of verb. Getting me? All the base form of verb is called the infinitive form of verb. Okay, से ऊपर verb form जेतेबेले पढिबा मु से ऊपर भी कहिबि तुमको infinitive टा कोन काहे कि ताको infinitive को आगला. Why the name infinitive is given? I'll tell you later. सेटा जेतेबेले एते समय नाही रे पिले एते माने डिटेल्स रे क्लास करिबा पे तथापि कहि दोछि gerund टा कोन? gerund टा होछि form of noun. verbal noun is called gerund. Our participles are nothing but it is called the verbal adjective. What is it? verbal adjective. मन रहिला कोन? participle होछि verbal adjective. एठी प्रश्न उठे सर verbal adjective कहिले कोन? when the ing form of a verb is used as an adjective, that is called participle. when the ing form of verb is used as noun, that is called gerund. मन रखिबा. when the ing form of verb is used as noun, this is called gerund. And when the ing form of verb is used as an adjective, that is called participle. Let me give some example. So exercising regularly gives benefit to a student. Look at this. Exercising regularly gives benefit to a student. So here what happens? Exercising, I have taken exercising as a noun here. I have used the subject here. So that's why exercising is a what?
इट्स ए वर्बल नाउन सो आउ जदि आमे अनदर एग्जांपल देखिबा जेमति मु कहिबी आई सो ए बर्निंग हाउस आई सो ए बर्निंग हाउस BURNING गोटे जलुथिबा घर मु देखिली सो बर्निंग दो इट हैज द ING फॉर्म it is used as an adjective getting me so this is what we call the gerund and participle form ठीक अछि पिले टिके आगु को जिवा तो मु कहउतली पैटर्न वर्तमान आसिला आमे कथा होउतले को पैटर्न विषय रे टेंस रो पैटर्न विषय रे आ से पैटर्न ता थिला सब्जेक्ट प्लस B1 ए पैटर्न अच्छा वर्तमान प्रश्न उठे एठी प्रश्न उठे सार एटा आपण सिंपल सेंटेंस कहि देले याकू इंट्रोगेटिव सेंटेंस केमिति करिबा नहीं सिंपल सेंटेंस तो कहि देले प्रेजेंट सिंपल फॉर्म नहीं कि सिंपल सेंटेंस कहि देले याकू इंट्रोगेटिव फॉर्म केमिति करिबा हाउ टू मेक इट इंट्रोगेटिव सो सिंपल सो इजी पिले गोटे दुईटा ट्रिक मने रखिबा दुईटा ट्रिक मु कहूची आई एम टेलिंग टू ट्रिक्स हियर प्रथम कथा मने रखिबा V1 is equal to do does plus was and V2 is equal to did plus was कौन V1 is equal to do does plus was and V2 is equal to what did plus base and आउ गोटे कहूची base जदि base अच्छे base is equal to what do plus base कौन लिखिली what I have written V1 is equal to do does plus base V2 is equal to did plus base and base is equal to do plus base this is the structure of interrogative sentence interrogative this is the structure इत्तिके भितरे interrogative finish so simple so easy जदि गोटे सेंटेंस को जदि तमे करूच इंट्रोगेटिव एतिके स्ट्रक्चर मन रखिले आ भूल तो हबो नाही कोन कोन मु कहली गोटे हला V1 do does plus base V2 did plus base do plus did I get that नहीं प्रश्न उठे सर मु एटू को टू पाइबी दिस इज द स्ट्रक्चर यस बेस इज इक्वल टू डू प्लस बेस इज इक्वल टू डू प्लस बेस V2 इज इक्वल टू डिड प्लस बेस V1 इज इक्वल टू डू डज प्लस बेस दिस इज स्ट्रक्चर ग्रामर स्ट्रक्चर ही या वर्तमान प्रश्न ए तीनटा मन रहिला डू डज प्लस बेस डिड प्लस बेस डू प्लस बेस वर्तमान जीवा टिके ऊपर को जीवा ऊपर कोन अछि बिले हे मु लिखितली ओ भूली गली ठीक अछि मु सपोज देखिली एठी आई ईट ए आर स्ट्रक्चर हला सब्जेक्ट प्लस B1 वर्तमान एटा थिला सिंपल सेंटेंस रो स्ट्रक्चर मु दोची अभिषेक मु तार एग्जांपल भी देबी एटा थिला सिंपल सेंटेंस रो स्ट्रक्चर वर्तमान सिंपल सेंटेंस को केते भाग रे भाग कराई जी पिले सिंपल सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स मु एते जिंसो नाही एठी so simple sentences are divided into 5 different groups कौन statement or declarative interrogative yes or no statement or declarative interrogative imperative optative and exclamatory एटा हैला तम कौन पांच प्रकार रो वाक्य सिंपल कहीं कहा गला नहीं एठी गोटे दौची शुभस्मिता मु दौची बेटा एग्जांपल भी दौची मु खाली कहि दौची तुमको एठी टिके आसी गला तो कोन हैला एठी सिंपल सेंटेंस कहले साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस कहले साधारण कहले कोन सिंपल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंस दैट्स आर मेड अप ऑफ one clause a sentence that is made up of a single clause मन रखिबा the sentence that is made up of a single clause is called simple sentence जदि गोटे वाक्य सिंगल क्लॉज रे तयार हिची सेटा होची सिंपल सेंटेंस मन रहला बिले ओके वर्तमान कथा होची बिले ए जेमति मो आई ईट सब्जेक्ट प्लस कोन नेली सब्जेक्ट प्लस V1 नेली ठीक अछि तो मोर एटा थिला सिंपल सेंटेंस रो स्ट्रक्चर वर्तमान टिके जे एटा स्टेटमेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट वर्तमान याकु मु सपोज इंट्रोगेटिव करिवि प्रश्नात्मक वाक्य रे परिवर्तन करिवि इंट्रोगेटिव कले कोन हि जिवो पिरे एटा हि जिवो ऑक्सिलरी
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कौन हो स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ठीक अच्छे ओके वर्तमान वर्तमान आई इट टा अच्छी आई इट टा आई इट सार मुझे ऑक्सिलरी कौठू पाइबी प्रश्न आसे मु केमिति जानिबी मु को ऑक्सिलरी लगेबी मु इज लगेबी डू लगेबी डज लगेबी डिड लगेबी विल लगेबी कौन लगेबी मु सेति पई तुमको एबे दो तीनटा सूत्र लिखिकी देली कौन v1 इज इक्वल टू डू डज प्लस बेस बेस इज इक्वल टू डू प्लस बेस तापर आउ कौन कहली डिड प्लस बेस यही जो तीन स्ट्रक्चर ठीक अच्छे v2 इज इक्वल टू डिड प्लस बेस यही जो तीन स्ट्रक्चर ये इम्प्लाई हम मन रहा पिले तो वर्तमान कौन है पिले ये जमी आई इट अच्छी इटा हूँ v1 इटा हूँ v1 जदि इटा v1 फर्मूला कौन मुझे जदि v1 इज इक्वल टू डू डज प्लस बेस एठी प्रश्न उठिला सार डू केतेबेले लगेबू डज केतेबेले लगेबू यस ना एटा प्रश्न ना डू केतेबेले लगेबू डज केतेबेले लगेबू सो सिंपल मु सेति पई आ गोटे फार्मूला लिखितली बेस इज इक्वल टू डू प्लस बेस इज इक्वल टू डू प्लस बेस सेटा मु लिखितली नहीं अरे ग्रामर भीतर को जाओ नहीं डोंट गो इनसाइड ग्रामर मु से पर्सन किछि नहीं बिना पर्सन रे हम सब जानिबा से पर्सन किसी नहीं बिना पर्सन रे सब जानिबा अरे पाठ कौन इंग्लिश ग्रामर व्याकरण द जस्ट अप्लाई द ट्रिक अप्लाई करके पाठ पढ़िबा पिले तो ये कौन है मु कौन लिखी बेस इज इक्वल टू डू प्लस बेस लिखी तो ये तो बेस फॉर्म अच्छी इनफ्लेक्शनल फॉर्म नहीं इनफ्लेक्शनल फॉर्म थिले डज लागिबो जदि इनफ्लेक्शनल फॉर्म नहीं ताले डू लगेबा सो सिंपल ताहले एठी कौन हबो आई इट देख पिले एठी जेहेतु एटा बेस फॉर्म इनफ्लेक्शन नहीं एस एस थिले इनफ्लेक्शन लागि थांता जदि इनफ्लेक्शन लागि थिले कोन इनफ्लेक्शन रे इनफ्लेक्शन लागिबो काहे की सर डू एठी जदि इट्स थांता ताहले डज ही थांता काहे की यस तार भी प्रश्न रो उत्तर मो पाखरे अछि आई हैव दैट आंसर काहे की देखो एठी डज लिखिली माने एठी इट्स लिखिली इंग्रजी रे सबु जिनिस गोटे मैचिंग अच्छी सबु जिनस गोटे मैचिंग अच्छी एठी एस लगिला एठी एस लगिला मैचिंग अच्छी सबु जिनस मन रहा एपटे जब भर्ब रे जदि एस लगी डू रे भी एस लगिबो सिंपल ना नहीं एते कौन अच्छी थर्ड पर्सन आउ कौन कौन ये सब जानिबार दरकार ही ना डज यू इट हबो ना ही चंदन हाउ कैन यू टेल डज यू इट डज ही इट तो एठी कौन लगी आई इट अच्छी ना आई इट अच्छी ना तो एथरे जदि आई इट अच्छी आम कौन करवा डू आई इट और डू यू इट आई इट ओके डू आई इट मु खाए कि मु खाए डू आई इट मु खाए कि तो पिले एटा थिला इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वर्तमान यार नेगेटिव स्ट्रक्चर टा कौन सो सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर टा कौन सो सिंपल डू प्लस नट यूज auxiliary plus not to write the negative structure don't I eat I do not eat यार आउरी स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर ये भाया अच्छी तो पिले आज तो समय जाइए पुणी देखा हम परवर्ती क्लास रे तुम मैंने जब सकाल क्लास रे जॉइन कर ताहले मु सबुदिन क्लास करी इफ यू विल जॉइन एवरी डे देन आई विल टेक द क्लास एवरी डे जदि पिला माने जॉइन करिवो सबुदिन ताहले मु सबुदिन क्लास करी पिला जॉइन करू नाहंती क्लास रे सीधी भाई मु क्लास करू नाही एतिक बेले ठीक अछि पिले तो आज पे एतिकी पुणी देखा परवर्ती क्लास रे ओके।